One company's subsidiary secured an export order worth rupees 22 crore from a European counter-drone systems provider. ये ऑर्डर कंपनी के Q4 FY25 रेवेन्यू का approximately 20% रिप्रेजेंट करता है and support its plan to expand globally in the defense electronics space. वहीं दूसरी तरफ एक हेल्थ केयर टेक फर्म ने कंप्लीट किया है एक्विजिशन ऑफ अ प्रीमियम इंश्योरेंस TPA valued at rupees 4,000 crore, strengthening its positioning as a comprehensive health benefits platform. With one scaling defense exports and the other evolving into a full-service health benefit provider, both updates point toward clearly defined long-term growth strategies. Stay tuned to learn more. Hi, and welcome to another exciting edition of Noisemaker, जहां हम चीजें सिंपल रखते हैं, फोकस करते हैं उन कंपनीज पर जो अक्सर स्पॉटलाइट में नहीं होती बट हैव स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू डिलीवर इन द लॉन्ग रन। आई एम निशांत, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एट Desvelado Advisory, और आज हम बात करेंगे दो ऐसी कंपनीज की जो अपने बिजनेस में सॉलिड प्रोग्रेस कर रही है एंड इफ करंट ट्रेंड्स रिमेन इंटैक्ट दे माइट कंटिन्यू टू ग्रो इवन फर्दर। बट बिफोर जंपिंग टू द कंपनीज, लेट्स सी द डिस्क्लेमर फर्स्ट. Any discussion, facts or writing provided are for informational purposes only and do not constitute a buy or sell recommendation. Please conduct your own due diligence before making any investment decision. Now, let's start with the first company, Paras Defense and Space Technologies Limited. Basically, it designs, manufactures and tests specialized products for the defense and space sectors. The company operates across four key verticals: specialized optics used in defense and space applications, defense electronics, heavy engineering systems for defense platforms, and systems that provide protection against electromagnetic attacks. So basically, company subsidiary has received an export order worth rupees 22 crore from CERBAIR, a European counter-drone systems provider. Order में up to 30 CHIMERA 200 सिस्टम्स का सप्लाई इंक्लूड है जो अगले 12 to 8 मंथ में डिलीवर किए जाएंगे। ये डील कंपनी के Q4 FY25 रेवेन्यू का लगभग 20% रिप्रेजेंट करता है एंड इट इज अलाइंड विद कंपनीज प्लान टू एक्सपेंड इन द counter-UAS सेगमेंट। कंपनी का फोकस है अपने प्लेटफॉर्म्स में थ्रेट डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर फीचर्स इंटीग्रेशन बढ़ाने का, एमिंग फॉर मोर कॉम्प्लेक्स हाई वैल्यू डिफेंस प्रोडक्ट्स। इस ऑर्डर के थ्रू कंपनी अपनी इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टफोलियो दोनों को ग्रो करना चाहती है। नाउ कमिंग टू द नंबर, Q4 FY25 was a solid quarter with revenue touching rupees 108.2 crore, up 26.3% year on year. On the other hand, EBITDA stood at rupees 28.3 crore in this quarter, giving a strong margin of 26.2%, while net profit came in at rupees 20.8 crore with an impressive 18.5% margin. For the full year, revenue grew 43.8% to rupees 364.6 crore, and PAT rose to rupees 61.4 crore, maintaining a healthy net margin of 16.5%. Going forward, the company is targeting 40 to 50% revenue growth across FY26 to FY27, mainly driven by its focus on high-value defense products, anti-drone systems, and increased participation in the space segment. कंपनी का प्लान है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को स्केल अप करना by setting up dedicated manufacturing lines for its counter-drone platform. ये स्टेप टाइमली एग्जीक्यूशन इंश्योर करेगा और एग्जिस्टिंग और नए एक्सपोर्ट ऑर्डर दोनों के लिए है। ये ग्रोथ आउटलुक काफी सपोर्टेड है। ग्लोबल लेवल पे एंटी ड्रोन और डिफेंस सिस्टम्स की डिमांड बढ़ रही है और इंडिया में भी डिफेंस स्पेंडिंग स्टेडली ग्रो कर रही है। इन ट्रेंड्स का बेनिफिट लेके कंपनी इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में अपनी रीच एक्सपेंड करना चाहती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपनी, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड, जो एक हेल्थ टेक और इंश्योरेंस टेक कंपनी है। कंपनी का काम है हेल्थ बेनिफिट्स एडमिनिस्टर करना फॉर कॉर्पोरेट्स, रिटेल पॉलिसी होल्डर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। ये प्राइमरली इंश्योरेंस कंपनीज के बिहाफ पे काम करती है। कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी के थ्रू पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज एंड इंश्योरेंस TPA प्राइवेट लिमिटेड का फुल एक्विजिशन कंप्लीट किया है, जिससे अब उसके पास रुपीस 4,000 करोड़ वर्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऐड हो गए। इस एक्विजिशन के थ्रू कंपनी को नए ज्योग्राफिक्स और इंश्योरेंस पार्टनर्स तक का एक्सेस मिला है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले मेडी असिस्ट मैनेज नहीं करती थी। ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी ग्रुप, रिटेल, इंटरनेशनल और गवर्नमेंट हेल्थ सेगमेंट्स में अपनी स्केल बढ़ा सके।
ये डील अर्लियर इंटीग्रेशन जैसे रक्षा एंड मेफेयर के बाद आई है और मैनेजमेंट का प्लान है कंपनी का प्रोप्राइटरी टेक स्टेक जिसमें फ्रॉड डिटेक्शन, क्लेम इन ऑटोमेशन और एनालिटिक्स शामिल है यूज किया जाए टू इम्प्रूव ऑपरेशंस एंड रिड्यूस कॉस्ट टू सर्व। आगे चल के कंपनी इस एक्विजिशन को एक लीवर के रूप में देख रही है टू डाइवर्सिफाई इट्स रेवेन्यू स्ट्रीम एंड ट्रांजिशन करना फ्रॉम अ ट्रेडिशनल टीपीए टू अ फुल सर्विस हेल्थ बेनिफिट्स प्लेटफॉर्म। Now talking about the company's financial, Q4 FY25 was fairly stable with revenue at rupees 188.9 crore, up 1.6% year on year. EBITDA came in at rupees 40.7 crore with a margin of 21.6%, while PAT stood at rupees 21.6 crore, giving an 11% net margin. For the full year, revenue grew 14% to rupees 723.3 crore and net profit saw a healthy 28.7% jump to rupees 91.6 crore. Going forward, कंपनी अपना ट्रांजिशन कंटिन्यू करेगी फ्रॉम अ ट्रेडिशनल टीपीए टू अ फुल स्किल हेल्थ बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेटर। एनुअल रेवेन्यू का 5 to 7% एलोकेट किया जाएगा प्लेटफॉर्म जैसे मैट्रिक्स और कंसेंट बेस्ड क्लेम्स प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस के लिए, जिसका मेन फोकस होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रोसेस ऑटोमेशन। कंपनी का एक और फोकस एरिया है SaaS बेस्ड इनकम ग्रो करना, जो अभी रेवेन्यू का सिर्फ 1.5 to 2% कंट्रीब्यूट करता है। इस वर्टिकल को स्केल करके कंपनी अपनी सर्विसेज को ज्यादा मार्जिन और रिकरिंग रेवेन्यू बेस में शिफ्ट करना चाहती है। इंटरनेशनल बिजनेस एंगल में सब्सिडियरी मेफेयर ने 71% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है इन एक्टिव मेंबर्स और अब 185 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंस है। कंपनी इस ग्रोथ मोमेंटम को यूज करेगी टू एक्सपेंड इन द IPMI इंटरनेशनल प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस सेगमेंट और अपनी इंडिया सेंट्रिक रेवेन्यू डिपेंडेंसी कम करने की। क्लाइंट मैट्रिक्स भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, 95% ग्रुप क्लाइंट रिटेंशन एंड 30.3% ओवरऑल टीएपी मार्केट शेयर के बेसिस पे कंपनी का स्कोप दिख रहा है टू क्रॉस सेल अनबंडल्ड सर्विसेज जैसे टेली कंसल्टेशन, वेलनेस, सेकंड ओपिनियन। ये रोड मैप सपोर्टेड है एक बोर्ड अप्रूव्ड फंडरेज प्लान से जो कंपनी के टेक लेड इनिशिएटिव को बैक करेगा व्हाइल इंश्योरिंग कैपिटल डिसिप्लिन। नाउ let's review some of our PSU that we have. Inox India up 6.2% that we covered. Axiscale Technologies Limited up 14.1%. Third, ICRA Limited up 3.5%. Next, NIBE Limited down by 1.7% and Antony Waste Handling Cell Limited up by 5.1%. So we have attached a QR on your screen so you can check out the old stock that we covered in the past in our Noisemaker segment for your decision making. Now, let's see the summary of today's recent filing, which includes Paras Defense and Space Technologies Limited. Basically, company subsidiary has secured an export order worth rupees 22 crore from CERBAIR, a leading European counter-UAS solution provider, for up to 30 CHIMERA 200 counter-UAS system to be delivered over the next 12 to 18 months. Medi Assist Healthcare Services Limited, company through its wholly owned subsidiary, has completed the 100% acquisition of Paramount Health Services and Insurance (PPA) Private Limited, adding around rupees 4,000 crore in premiums under administration. So that's it for today's Noisemaker edition. अगर आपको breakdown informative लगा हो तो you can scan the QR to read the full report. We will be back soon with more simple and clear market updates. Until then, stay curious, stay informed, and stay ahead.